Hello everyone, welcome back to your own channel, Study with Alka Kandwal. I hope all of you are doing great and are very positive. I am Alka Kandwal. I can speak in English, Hindi, Nepali, Assamese and Garhwali, so you can connect with me in any of the language you are comfortable in. So, for those who are new to the channel, I would like to give you all a brief introduction about the channel. I am Alka Kandwal, and this is an educational channel wherein we talk about mathematics and the topics of mathematics from grade 7 to 9. And also, I have dedicated a separate playlist for those who are preparing for competitive exams, and wherein computer is a very important section. And also our focus is PGT and TGT computer science. So we will be taking up entire CBSE grade 11 and 12, the Python part, SQL part, we will be taking entire syllabus. So if you have not yet liked, shared and subscribed, make sure you are liking, sharing and subscribing to the channel. That is the very important part to motivate me. Yes. So I feel motivated and I can come up with various interesting topics. So without wasting much time, let us talk about the topic of the day. So do you remember in Python, we will be talking about Python today. So we have already discussed about if, else, whenever you know that whenever there is a condition. For example, I ask you to write a Python program to check whether a student has passed or failed in the exam. So you know that there is a condition. If the percentage is greater or equal to 33, then the child has passed, otherwise failed. So there, wherever there is a condition, we will be using if and else. And if there are multiple conditions, we will be using if, elif. This we have discussed in detail in the last session. Now today, we will be talking about for. We will be talking about the loops. How does the loop work in Python? So before that, we would require some knowledge of the range function. So here we go. Let us start with the session today. Are you all ready for it? I hope everyone is ready and excited. So here we go. So no, the function here we will be talking about is the range function. Yes, the range. Now, how does this range function work? Let us talk about it. Okay, how does this range function work? So now when we are talking about range, for example, I say 1 comma 10. So this function, this range will give the values from 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मतलब 1 से शुरू होगा और 9 में stop करेगा. One value, then the higher range. Is it fine? For example, मैंने बोला range 2, 5. So what will be the values here? 2, 3 and 4. Does it make sense? Now, for example, I say range 1, 4. So what are the values which will be there? 1, 2 and 3. Okay. Now, for example, SI range 1, 10, 2. अब क्या है? अब इसमें 3 वैल्यूज है. पहले तक तो स्टार्ट वैल्यू दे रखी थी, एक स्टॉप वैल्यू दे रखी थी. स्टार्ट से हमको स्टार्ट करना है, जो भी स्टॉप है उससे एक वैल्यू पहले तक हमको जाना है. अब जब हम लोगों को 3 वैल्यू दी है, स्टार्ट, स्टॉप एंड देयर इज अ स्टेप, ये इसको बोलते हैं स्टेप. अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन द स्टेप 1 को आगे 2 स्टेप्स ऐड करो. 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11. मगर वो इससे बाहर है ना, ये स्टॉप रेंज से बाहर है. 10 से नीचे तक की वैल्यूज आएगी इसमें. सो द स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, एंड दिस इज योर स्टार्ट, स्टॉप, एंड व्हाट आर द स्टेप्स यू आर गोना डू. डज इट मेक सेंस? तो आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले करनी है वैल्यूज लाइक दिस 5, 10, 15, 20, 25. तो मैं अगर लिखूं रेंज, रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड व्हाट इज द स्टॉप, मतलब 30 से कम है, और 5 5 का स्टेप दे दो, तो इसमें क्या क्या वैल्यू होंगी? 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30. बट दिस इज, we cannot include 30, right? Because ये stop range है, इससे पहले तक की values आ जाएंगी. Are you understanding the logic? So that is a very important function in Python to understand the for loop. Is it clear, everyone?
That is an easy one. Does it make sense? So now let us do a program and then let us understand that how is it working. Is it fine? Let us open the Python ideally. Okay, so here this is the interactive mode and here we go. Let us go to new file and here let me write for, I'm using the for loop now. For I in range, for I in range 1 comma 10. Okay, for I in range 1 comma 10. This is the syntax, print I. Okay, so should we run it? Run the module and just okay. And here we go. Let us see. Give any name you can give. Fine. Let us see. Is it giving the output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Did I tell you that range क्या करेगा? 1 से लेकर 10 तक था हमारा range. So just check out the program. Is it not? So what did I write? Yes, what did I write? For I in the range of, I had written for I in the range of, in range 1 to 10. And then I gave print I. So what did it give the output? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is the value. This is how you will be using the range function. मतलब I एक वेरिएबल है और वो इस रेंज में है. तो रेंज मतलब पहले I की वैल्यू 1 हो रही है तो 1 प्रिंट करो, फिर I की वैल्यू 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, ऐसे करके जा रही है. Is it fine? Does it make sense? Now for example, I tell you all to write a program in Python to find the sum of first n natural numbers. कोई भी हो सकते हैं, कितने भी natural numbers हो सकते हैं, उनका सम निकालना है. अब हम क्या करेंगे? What do we do? मतलब अगर मैंने 5 दिया तो आउटपुट आना चाहिए 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इतना आउटपुट आना चाहिए. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो आंसर आ जाना चाहिए द सम इज 15. So how do we do? So let us ask the user first. N is equal to int. Input ले लेते हैं. Input, enter up to how much you want. Enter up to which natural number you want. Okay, whatever you want to display, you write it within double quote. ठीक है? And enter up to which natural number we need. And then what do we do? अब बताओ. एक वेरिएबल ले लो जिसमें let us take the variable to be sum. Sum is equal to 0. Now just check the program. For I in range, for I in the range of, tell me, what will be the range? It starts from 1 and n plus 1. है ना, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर होगा, जैसे 5 करना है तो 1 6 हमारा रेंज होगा, तभी तो 1 से 5 तक हो जाएगा. तो फॉर I in the range of n plus 1, sum is equal to sum plus I. Does it make sense? And then print the value of sum. Print sum. द इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडेंटेशन मतलब यहां से जब हमने फॉर लूप यहाँ पे लगाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा. सो लेट अस सी हाउ द प्रोग्राम इज वर्किंग. लेट अस सी द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम नाउ. अब यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, yes, so here we go. So now see n, for example यूजर ने 5 डाला है. अब हमने एक वेरिएबल ले लिया है सम. सम की वैल्यू कितनी है? 0. नाउ आई की रेंज कितनी है? 1 से लेकर 1 कॉमा n की वैल्यू क्या है? 5. तो 1 से लेकर 6 तक. तो हमारा सम की वैल्यू देखो, जब हमारा आई की वैल्यू 1 है, इन द फर्स्ट आइटरेशन आई इज इक्वल टू 1, सो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम इज ऑलरेडी 0, 0 प्लस 1, सो द सम इज रेफरिंग टू 1 नाउ. फिर हमारी रेंज की दूसरी वैल्यू क्या है? 2. 1 हो गया, अब 2 में गए. तो जब हमारी आई की वैल्यू 2 है, देन अगेन सम की इनिशियल वैल्यू 1 है. सम प्लस आई इज 2, सो वी आर हैविंग 3. नाउ द रेंज 1 2 वी हैव डन. नाउ आई की वैल्यू 3 हो जाएगी. जब 3 हो गई तो सम की वैल्यू 3 है. 3 प्लस 3 6. हमारी आई की वैल्यू 4 होगी, तो 6 प्लस 4 10.
एंड देन आई की वैल्यू 5 होगी, तो 10 प्लस 5 इज 15. Is it okay? Does it make sense? So we get the output that the sum of the first five natural number is 50. Does it make sense? ठीक है, हमने इनिशियलाइज 0 से कर दिया सम को. अगर मैंने सेम प्रोग्राम को बोला दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तब हम क्या करेंगे? तब हम एक वेरिएबल ले लेंगे when it is asked to multiply the natural numbers. Now, like for example, first five natural numbers. So that is the program for the factorial. The mathematical term for it is factorial. To find the factorial of the number. तो जो हमारा ये वेरिएबल है उसको हम क्या इनिशियलाइज कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल आई टेक द वेरिएबल टू बी 1, f इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हमने मल्टीप्लाई बाई 0 कर दिया तो पूरा आउटपुट ही 0 आ जाएगा. एंड देन वी विल राइट f इज इक्वल टू f इंटू 1. डज इट मेक सेंस? Factorial of a number. So let us do this program and then let us understand. Does it make sense, children? Yes? I hope this much is clear to all of you. Yes. Here we go with the program. So this was the program we did, right? तो फिर इसमें क्या करना है हम लोगों ने? बताओ. मैंने बोला f का एक वेरिएबल ले लो, उसको इनिशियलाइज कर दो 1. Let us ask n from the user int input. Yes, input, and then enter the value, enter the value, and then this is closed and we got this one, and then f हो गया. फिर हम एक ले लेंगे for I in range, बताइए 1, n plus 1, bracket close, colon, be careful about the indentation, and if I say f is equal to f multiplied by I, okay, and then if I write print the factorial is f, close, run the program. Okay, run the program, run the module. Is it fine? Let us see. Enter the value. Let us say check for 5. Whoa, yes, it is correct. अब check करो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना आता है? 120 आता है. तो see the logic. Are you understanding the logic? कि हमने एक वेरिएबल लिया, वो 1 इनिशियलाइज्ड है, तो हमारा जो रेंज है 1, जो भी यूजर ने डाला 5 डाला, तो हमारा रेंज हो जाएगा 1,6, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट में रेंज फंक्शन पढ़ा. सो व्हेन इट इज 1,6 इट विल द लूप विल वर्क. जो फॉर लूप है वो स्टार्ट करेगा 1 से 2 3 4 5 तक जाएगा. सो वी विल बी हैविंग f इज इक्वल टू f इंटू आई. पहले f की वैल्यू 1 इंटू 1 होगी, फिर 1 इंटू 2 होगी, फिर 2 इंटू 3 होगी, 3 इंटू 4. ऐसे करके हमारा लूप कब स्टॉप करेगा? जब i की वैल्यू पहुंच जाएगी कहाँ पे? When the value of I reaches what? 6. The condition fails, then it will print the value of the factorial. Be very careful about the indentation. अगर आपका प्रॉब्लम है, अगर आपने एरर किया, यहाँ पे कोलोन नहीं लगाया, if you just print यहाँ के जगह यहाँ पे लगा दिया, now see, you will not get the output as you desire. See, अब हमने लूप के अंदर ही प्रिंट लगा दिया, तो हमारा let us see what is the thing you will be getting. Enter the value 5 and see. It is giving for each step. The factorial first step में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया. So we want the final one. That is why we keep the print statement here. So for loop, I will take 1-2 more classes about the same, because if it's new to you, then it will take some time for you to just take out some time to practice. और समझने में भी इसमें थोड़ा सा time लगेगा. Eventually you will understand. I will take 2-3 classes more. Till then you just practice the sum of natural numbers, sum of and the product of n natural numbers. Do practice these programs. And what to say? So I think you will remember to like, share and subscribe. So just stay tuned and we'll meet in the next session with some more programs for the for loop and also the while loop. We'll start with the while loop.
and then very important about the break and continue statements and what are the difference between these two statements. So let's hope we meet again soon. Till then, take care. Have a fantastic day ahead. Bye bye, everyone.